अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के कितने एप्लीकेशंस है और कहाँ पे कैसे सॉल्व होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है, आए पढ़ते हैं। गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन आइए गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a low charge surface spherical conductor लेट अस कंसिडर हमारे साथ एक हलो चार्ज सरफेस है जिसका अपर शेल जो है ना वो अपर सरफेस जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके अंदर जो है ना वो नेगेटिव चार्ज जो है ना यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड इंटरनली नेगेटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पे हमारे साथ जो है ना एक पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। लेट अस कंसीडर a low charge surface which is positively charged. Consider a Gaussian surface passing through point P, passing through point P inside a hollow sphere thus electric flux will be delta pi of E is equal to Q upon epsilon naught। यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरते। we know that pi is equal to E into A। A can never be zero, एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो एरिया अलो स्फीयर सरफेस है, एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता है। therefore we conclude that E is equal to 0, the electric flux, and we deduce that and we conclude that electric field anywhere inside a low charge surface does not exist। ये थी हमारी गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, जो कि कहते हैं अगर कोई सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो और हम इसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है ना डिटरमाइन करने की कोशिश करके कितने फ्लक्स दरमियान से गुजरती है, तो वहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं गुजरती। इसका मतलब है कि एरिया ज़ीरो नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लाइंस वो ज़ीरो है। और हम ये कंक्लूड करते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड hollow charge surface does not exist। Respected all, thank you so much for watching this video. Thank you।